Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the critical thinking. Let's start. Hello students, we are at the light board, and as discussed in the intro, today we are going to discuss another type of questions regarding logical reasoning. And today our topic will be critical thinking. Now what is critical thinking? वैसे तो इसके नाम ही से जाहिर है कि थिंकिंग लॉजिकली, थिंकिंग इन अ क्रिटिकल मैनर, कि आप किसी चीज़ को बड़े ही लॉजिकल अंदाज में आर्गुमेंट बेस्ड उसको डिसाइड कर रहे हो. तो यही बेसिकली हम करते हैं. इफ़ यू आस्क मी टू डिफाइन इट, इट्स डेफिनेशन वुड बी it is a process of separating truth from falsehood. बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है कि हम ट्रुथ को क्या करते हैं, फॉल्सहुड से सेपरेट करते हैं और we separate possible conclusions from improbable conclusions. जो हमारी probable या possible conclusions हैं उनको हम improbable conclusions से भी separate करते हैं. अब होता क्या है इसमें, you are actually given a whole paragraph. A paragraph is given with certain conclusion. एक certain conclusion के साथ आपको एक paragraph जो है वो दिया होता है. In the end, you are asked to evaluate whether the conclusion is true, probably true, false, probably false, or you have insufficient data to evaluate that conclusion. So एक तरीका तो इसका ये होता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, एक उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन दी जाएगी, and then you will be asked to evaluate whether this conclusion is true, it is false, it is probably true, probably false, or you have insufficient data to evaluate whether this opinion is true or it is false. So ये एक तरीका है critical thinking के क्वेश्चंस को पूछने का. दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड क्या है
two statements will be given दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको दे दी जाएंगी on the basis of these two statements you will be asked to evaluate whether the third statement is true or false. एक तरीका ये है कि आपको दो known facts दे दिए जाएंगे and on the basis of these two known facts you will be required or you will be asked to evaluate whether the third statement is true, false or even uncertain. These three options will be given to you in order to solve that problem. So in our first lecture of critical thinking, we shall be discussing about this particular type of question, and in the second lecture, inshallah, we will be discussing these types of questions. So let's start our examples और फिर हम उसके थ्रू देखेंगे कि various examples के थ्रू कि how actually you can critically evaluate whether a statement is true, probably true, false, probably false, or you have insufficient data to prove that statement. So आए चलते हैं examples पे. Lessons, we are back with the example. I have written the complete statement and you can read it out, and then we'll discuss some MCQs regarding that particular paragraph. Although it is agreed that China is maximizing its defense budget, but there is some doubt about the total amount of defense budget. Our research shows that the annual defense budget has been increased from 31 billion in 2000 to over 120 billion in 2010. This figure is almost double the official figure presented by the government, who failed to include expenses of research and development. In 2010, America's defense budget was 400 billion. Considering this rise, China's budget may overtake America's by 2030. In addition to military spending, Chinese military has the largest number of people than any other army in the world. So here we have the statement. एक complete paragraph जो हमें मिल गया. अब इस paragraph से relevant हम MCQs different करेंगे. जो statements की options हैं वो मैंने आपके लिए already यहाँ लिख दी हैं. So आप उसको हम यहीं करते रहेंगे और इस portion को हम use करेंगे for writing down our statement. The very first statement we are considering is the figures presented by the government regarding defense budget are misleading. Now the question is, that is the first statement. हम बार बार options नहीं लिखेंगे, options हम यहीं discuss करते रहेंगे. Now the question is whether this statement is true, probably true, insufficient data, probably false or false. So सबसे पहले तो हम देखेंगे कि insufficient data, can it be an option? No.
because the data has been presented in detail, बड़ा clearly categorically हमें data जो है वो present कर दिया गया है. So by no means we can say that we have insufficient data to conclude whether it is true or false, or probably true or probably false. So we do not have any basis, any logic to say that we have insufficient data. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. Now come to the next one, false. फॉल्स तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, एंड नॉट इवन प्रोबेबली फॉल्स भी नहीं कह सकते. रीजन, बिकॉज इन द पैराग्राफ वी हैव बीन टोल्ड कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है. जो ऑफिशियल फिगर्स हैं और जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनके नंबर्स आपस में मैच नहीं करते. सो मिसलीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसको बिल्कुल हम एब्सोल्युटली फॉल्स या प्रोबेबली फॉल्स भी नहीं कहा जा सकता. नाउ द रियल क्वेश्चन इज, इस वाली स्टेटमेंट के हवाले से द रियल डायलेमा यू विल फेस कि इसको हमने प्रोबेबली ट्रू कहना है या ट्रू कहना है. दिस इज द रियल क्वेश्चन. प्रोबेबली ट्रू क्या होता है या प्रोबेबली फॉल्स क्या होता है कि वेयर देयर इज मोर लाइकलीहुड, मोर प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू और विल होल्ड फॉल्स. और ट्रू और फॉल्स तो वी ऑल नो कि ट्रू और फॉल्स क्या है कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस जो चीज़ सही होगी दैट विल बी कंसिडर्ड ट्रू, एंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस दैट विल बी कंसिडर्ड फॉल्स, वो क्या होगी, फॉल्स. इसमें 100% हम कह सकेंगे भाई ये बात तो क्या है, गलत है. सो बहुत सारे लोगों को शायद लगेगा कि इसकी जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन से सिर्फ लिख देता हूँ, ए बी, पैटर्न वही रहेगा, सी डी एंड ई. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन our correct option will be option alpha. अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन अल्फा क्यों, probably true हम क्यों नहीं कह रहे, why we are making a clear cut statement कि it is true. बड़ी उसकी obvious सी reason है. ये देखें, आपको यहाँ उन्होंने बताया that the government who failed to include expenses of research and development, because the government had clearly failed, that is why स्टेट्स जो उसके स्टैटिस्टिक्स हैं दे विल बी मिसलीडिंग फॉर श्योर, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ जानबूझ के ऐड की ही नहीं है. व्हेन दे हैव डिलिबरेटली नॉट एडेड और दे हैव फेल्ड टू ऐड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली डिफेंस बजट के जो फिगर्स हैं दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू. सो ये आपने इस तरह से देख लेना है इसको, इट इज़ नॉट प्रॉबेबली ट्रू बिकॉज दे हैव फेल्ड, क्लियरली दे हैव फेल्ड टू ऐड दीज एक्सपेंसेस. सो इसको हम प्रॉबेबली ट्रू नहीं कहेंगे, हम इसको क्लियर कट क्या, प्रॉबेबली ट्रू नहीं कहेंगे बल्कि क्लियर कट ट्रू कहेंगे ऐसे. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी पैराग्राफ के मुतालिक क्या है. चाइनीज गवर्नमेंट has failed to include Chinese government has failed to include expenses of research and development in their budget. It suggests that some other expenses may also be omitted from the budget. Again, option alpha, beta, Charlie, delta and eta.
So here we have another statement. The Chinese government has failed to include expenses of research and development in the defense budget. Now, can we infer, or can we imagine, can we assume from that fact that other expenses may also be omitted from the budget? तो इसमें true क्या होगा और false क्या होगा, और probably true या probably false क्या होगा? Again, here we cannot assume that we have insufficient data. Insufficient data वाला scenario हम assume नहीं कर सकते. इसमें हम क्या करेंगे? और false का भी नहीं कर सकते because logic तो बन रही है ना, थोड़ी बहुत reason inference तो develop हो रही है, because एक से दूसरी चीज़ क्या है, that is quite linked to each other. तो false या probably false तो नहीं हो सकते. The question is, it is a true statement or false statement? यही main question है यहाँ पे. तो यहाँ पर ये statement absolutely true नहीं है. यहाँ पर ये statement क्या है? It is probably true. कि मुमकिन है, एक tendency तो show हो गई कि they are inclined to omit certain expenses. So tendency तो visible है. But क्या हर बार वो कर देंगे, या क्या it is a compulsion कि वो दूसरे expenses भी omit करेंगे? No, I do not think so. It is clearly visible कि ये कोई पेट रूल नहीं आप डेवलप कर सकते हो, थंब रूल डेवलप नहीं हो जाएगा कि एक टाइप के एक्सपेंस ओमिट किया तो दूसरे का भी हर सूरत में ओमिट करेंगे. तो ट्रू तो उस सूरत में होगा ना, और ये भी कोई आप कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि एक का ओमिट किया तो दूसरे का किसी सूरत भी नहीं करेंगे. तो फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स या एब्सोल्युटली ट्रू पे तो नहीं जा सकते. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, बिकॉज इट शोज द टेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट कि एक ओमिट किया है तो हो सकता है कोई दूसरा भी ओमिट किया हो. मसलन इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं. इफ अ चाइल्ड इज नॉट डूइंग होमवर्क फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वन और टू सब्जेक्ट्स, यू मे फील एंड यू मे सेंस कि उसने शायद किसी और भी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया होगा. सो दिस स्टेटमेंट विल प्रोबेबली होल्ड. कुछ और स्टेटमेंट्स इसी पैराग्राफ के हवाले से देखते हैं और फर्दर ऑप्शंस को भी हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं. तो आए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं. क्वेश्चन 3 हम इसी का देखते हैं जी. और if the government has omitted certain expenses or figures from defense budget, it may have omitted or fabricated figures and other key areas, i.e. agriculture, justice, human rights, crime rate, etc. Now there is another probability. एक और लॉजिकल कंक्लूजन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने किसी एक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में अपने जो फिगर्स हैं उनको ओमिट किया है, कुछ सर्टन एक्सपेंसेस ओमिट किए हैं या प्रॉबेबली हमें सही फिगर प्रेजेंट नहीं किए, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसने बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं अपने, या बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसमें भी अपने एक्सपेंसेस या अपना जो डेटा है वो हमें प्रॉपर्ली, अपने फिगर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट ना किए. ठीक है. अब यहाँ
फिर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, इट इज़ नॉट अबाउट ट्रू और प्रॉबेबली ट्रू, ऑल्दो कि आपको लग यही रहा होगा कि सर जैसे हमने पिछले में किया है कि अगर उसने एक में छुपाया तो प्रॉबेबली उसने बाकी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी. बट हियर we do not have any data regarding human rights, crime rate, justice, agriculture. We do not have any budget. We do not have any figures. We do not have any data. तो जब ये चीज़ें हैं ही नहीं तो इसलिए फिर हम इन चीज़ों पे कोई इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते. लास्ट हमने इसलिए इवैल्यूएट कर लिया था कि जिस चीज़ से डिफेंस से रिलेटेड वो चीज़ें पूछ रहा था, डिफेंस से रिलेटेड सारे के सारे बजट्स और सारे के सारे फिगर्स जो थे वो हमारे पास मौजूद थे. बट हियर वी डू नॉट हैव एनी डेटा रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, क्राइम रेट, जस्टिस, एग्रीकल्चर. वी डू नॉट हैव एनी डेटा. सो हियर आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इनसफिशिएंट डेटा. ठीक है, क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा ही हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में हमें उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ. सो आए अब चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका देखते हैं चल के. इफ देयर इज a difference between the real figures and official figures, it may be because of a clerical error. अगर रियल फिगर्स में और प्रेजेंटेड फिगर्स में, ऑफिशियल फिगर्स में डिफरेंस आ रहा है, कोई एनॉमली आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो ये फ़र्क किसकी वजह से हो सकता है? ठीक है, क्लरिकल एरर की वजह से हो सकता है. नाउ वी कैन नॉट से विद एनी सर्टेनिटी इट इज़ ट्रू, बिकॉज इसके तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं. वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड कि कोई क्लरिकल डेटा का या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का कोई जिक्र हो. वी हैव नथिंग लाइक दैट. प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है, बट विल इवैल्यूएट कि है या नहीं है. इनसफिशिएंट डेटा तो नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिफेंस बजट, तो उसके रिलेटेड तो हमारे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है. एंड नाउ वी कैन नॉट से इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. एब्सोल्युटली फॉल्स और एब्सोल्युटली ट्रू तो हम नहीं कह सकते ना, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट एविडेंस जिसके बेस पे हम कह दें कि नहीं भी बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल गलत बात है. सो हम ये तो नहीं कह सकते. सो इट कैन बी ईदर प्रॉबेबली ट्रू और प्रॉबेबली फॉल्स. दो चीज़ें होंगी. प्रोबेबिलिटी में जाएगा बिकॉज हमारे पास कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है इसको निगेट करने का या इसको एक्सेप्ट करने का. सो अब हम आते हैं कि प्रॉबेबली ट्रू और प्रॉबेबली फॉल्स में से व्हाट शुड वी सेलेक्ट. You can understand that the defense budgets or the figures for the budgets are prepared with utmost of care. So it is impossible or probably not possible that these errors are because of the clerical error, number one. Number two, they have been published, they have been printed, they have been announced. तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, उस वक्त तो क्लैरिकल एरर नहीं था. इफ़ देयर वाज अ क्लैरिकल एरर, अगर हम उसको मान भी लें कि किसी वक्त में क्लैरिकल एरर जो था वो एग्जिस्ट करता था, तो इवन देन जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा था इट शुड हैव बीन रेक्टिफाइड. सो दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली फॉल्स. वी कैनॉट से विद कंप्लीट अथॉरिटी दैट इट इज़ फॉल्स, बट इट सीम्स लॉजिकली इम्पॉसिबल और इट सीम्स लॉजिकली इनकरेक्ट कि भाई सिर्फ क्लैरिकल एरर की वजह से
इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमें आ सके. So in this particular question our option will be delta, that is probably false. So अब next बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे. Now we have another question of this chunk, that is question 5. In 2010, America's defense budget was much lower than Chinese. Now this statement is evident. It involves figures, it involves facts. इसमें हमें probably true और इस तरह से जानने की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें हम क्या करेंगे? We have the figures that in 2010 the annual defense budget of China was 120 billion, while in 2010 America's defense budget was $400 billion. So we know that America's defense budget was much higher than China's defense budget. So this statement is absolutely false. This is not a true statement. This is a completely false statement. So इस तरह से आपने देखा कि considering this paragraph, we created 5 different scenarios in which each one of them was different from each other. पहले में हमने देखा कि the first statement was true, although it seemed that it is probably true, but it was true. Then the second one was probably true. The third one, in the third statement we were having insufficient data, and the fourth statement was probably false, and the last one was absolutely false because we had the figures, we had the data, and we could conclude without any doubt that this statement is false. So इस तरह से आपने इसको देखना है. एक और एग्जांपल आपके लिए करते हैं और फिर हम देखेंगे उस से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कि किस किस तरह से हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे 4-5 डिफरेंट सिनेरियोज बनाएंगे. सो आए चलते हैं उस नेक्स्ट एग्जांपल पे. Ladies students, we have another example for you. A detailed statement is mentioned here and then we'll solve questions related to that statement. पहले statement पढ़ते हैं. Turkey is a surprising addition to the list of rapidly growing economies. Its economy increased quite rapidly in 2011 at the rate of 8.5%. But such rapid growth leaves worries regarding possible side effects. For instance, in 2011, Turkey's inflation rate was well above that of its peers. Secondly, there is increasing concern regarding Turkey's growing dependence on foreign capital. A large portion of Turkey's banking system is part owned by banks within the Eurozone. As the single currency falters, such a dependence raises questions about the stability of the Turkish growth. अब इसके मुतालिक हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि ये सही है या गलत है या जो भी 5 स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन 1. There is a concern that Turkey's growth
was at the risk of faltering after 2011. Now let's talk about this statement, that if this statement is true or false. अब clearly हमें यहाँ पर बताया हुआ है उसने, this rapid growth leaves side effects regarding leaves worries regarding possible side effects. ठीक है, और फिर उसने नीचे बताया भी है कि inflation rate was much higher than above the peers, so this growth will not be sustainable. तो ये कंसर्न तो जो है ये मौजूद है, and this concern is 100% true. So out of these options, our correct option will be alpha, true. अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि सर हाउ कैन वी से कि जी ये खदशा दुरुस्त है या नहीं है, दिस कंसर्न इज जेन्युइन और नॉट. मतलब ये कंसर्न ये भी तो हो सकता है ना कि दिस कंसर्न इज नॉट द राइट कंसर्न, एंड देन वी may think that this statement is probably true. But remember, read the statement again. We are not talking about whether this concern is true or not. We are only talking about whether there is this concern or not. हम ये तो कह ही नहीं रहे कि ये concern सही है या गलत है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये concern मौजूद है या नहीं है. तो वो concern तो obviously मौजूद है. So इसलिए this statement is not probably true. This statement is absolutely true because उसने clearly बता दिया कि ये concern, ये परेशानी जो है वो मौजूद है. Leaves worries का मतलब है कि concern तो definitely मौजूद है. अब हम चलते हैं अपनी next statement पे. As Turkish banks are part-owned by the banks within Eurozone, they may face problems if banks in Eurozone face financial crisis. Alpha, beta, Charlie, delta and eta. So ये statement वो क्या कह रहा है? Because these banks, the majority of the Turkish banks are part owned by the banks within Eurozone, so there is a probability, वो ये कह रहा है कि there is a probability कि जब उन पे अगर क्राइसिस आएगा, यूरोजोन के बैंक्स पे क्राइसिस आएगा, तो टर्किश बैंक्स भी उससे सफ़र करेंगे. नाउ दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी होल्ड एब्सोल्युटली ट्रू. लिंक तो बन रहा है बट एब्सोल्युटली ट्रू नहीं हो सकती बिकॉज दे आर ओनली पार्शली ओन्ड. ठीक है, दीज बैंक्स आर नॉट फुली ओन्ड बाय द बैंक्स विद इन यूरोजोन. तो फुली ओन्ड तो नहीं है, नंबर वन. Number two is, the second factor is that they are actually working in two different economic zones. तो ज़रूरी तो नहीं है कि यूरो जोन में अगर क्राइसिस आया तो टर्की भी उससे सफ़र करेगा. तो मोर और लेस उससे मुतासर तो हो सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सफ़र, बट देयर कैन बी अ लॉजिकल inference between these two, but we cannot say with any guarantee, we cannot say with any surety that they will definitely suffer. So ये true तो नहीं होगा,
It will not hold true in all cases, but we can say that this scenario will probably be true, because if 50% of the shares are held by the banks within Eurozone, if they suffer, the Turkish banks or Turkish banks may well also suffer the financial losses, and they may also suffer that financial crisis. So option alpha नहीं होगा, यहाँ पर हमारा option क्या होगा? Our option will be option beta. कुछ और फर्दर एग्जांपल्स करते हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो फिर देखते हैं कि बाकी स्टेटमेंट्स क्या सिनेरियो क्रिएट करती हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चंक. Turkish banks are part owned by banks within Eurozone and provides greater variation to the market and extra finance to the economy. Now again we have the same 5 scenarios. If we look at this statement that Turkish banks are part owned by banks within Eurozone and this provides greater variation to the market and extra finance to the economy. Nothing has been said regarding that. इस चीज़ के मुतालिक जो है कुछ भी हमारे पैराग्राफ में नहीं कहा गया. We haven't been told anything about it कि ये ऐसा है या नहीं है. So probably हमारे पास इसमें जो ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है, that is our option C, and that is insufficient data. We require more data to verify or to attest, to say with any conformity that this statement is true, false, probably true, or probably false. So we need more data and we need more facts and figures and statistics to verify or reject that statement. So इसलिए we are choosing option 5. Now we are moving to another question. That is question number 4. Turkish banks are part owned by banks within Eurozone, as this provides greater links with European banks and helps their ascension into European Union.
Now we have another statement that these banks are linked or they are part owned by the European banks because this will help them have more economic ties with the European banks, and these ties will help their accession to the European Union. Now this statement is obviously true तो नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, probably true भी नहीं हो सकता, then insufficient data भी नहीं हो सकता because we know that these banks are part owned by European banks. So this statement is probably false. We'll go for option delta. Why should we go for option delta? बड़ी obvious उसकी reason है. Obvious उसकी reason ये है कि we have not been told कि जो यूरोपियन यूनियन में एडिशन है उसके बेसिस फाइनेंशियल आपके लिंकेजेस हैं या फाइनेंशियल टाइज हैं विद द यूरोपियन बैंक्स. सो दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ ascension into यूरोपियन यूनियन बिकॉज दैट थिंग इज अ पॉलिटिकल मैटर. वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन से ऐसे डायरेक्टली नहीं है. सो इकोनॉमी एक्चुअली has no role to play or has a very insignificant role to play as far as this paragraph is concerned. इसमें ऐसे हमें कुछ नहीं बताया हुआ, आपने अपनी समझ बूझ लड़ाने की कोशिश नहीं करनी, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें कि we have not been told that these two things are linked to each other, and because these two things are not linked to each other, so this statement we cannot say with absolute guarantee that it is absolutely false, but we can predict that this statement is probably false क्योंकि इन दो चीज़ों का आपस में कोई बज़ाहिर ताल्लुक नहीं बताया हुआ. सो अब हम चलते हैं अपने इस चंक के लास्ट क्वेश्चन पे. नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चंक, एंड दैट इज द इकोनॉमी ऑफ टर्की was absolutely stagnant during 2011, and the options are alpha, beta, Charlie, delta and eta. We are following the same pattern. वो क्या कह रहे हैं कि टर्की की जो इकोनॉमी थी 2011 में स्टैग्नेंट थी. स्टैग्नेंट मीन्स इट वाज टोटली डल एंड ड्रैब एंड नथिंग वाज हैपनिंग इन 2011. नाउ दिस इज एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन क्लियरली टोल्ड its economy increased quite rapidly in 2011 at the rate of 8.5%. So चूँकि हमें बता दिया गया, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि इकोनॉमी जो थी that was not at all stagnant, that was increasing, that was expanding at a very rapid pace. So this statement is absolutely false. So you have got an idea कि किस तरह से हमने जो known facts हैं उनको false या true करना है, और जो in between है grey areas में उनको हमने देखना है कि वो probably true की तरफ जाते हैं या probably false की तरफ जाते हैं. And if there is no mention of data or statistics or facts or figures, then we'll choose the option C, that is insufficient data. जैसा कि हमने अभी इसमें किया था कि because they are partly owned by the banks within Eurozone, they'll get more financial assistance or it will create more variation in the market. Nothing was told about it in this particular piece of writing. That is why we chose insufficient data. So hopefully कि आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो clear हो गई होंगी. But let's have another example before closing this lecture, और देखते हैं कि और different scenarios भी कुछ create करते हैं और देखते हैं कि हमारी options क्या बनती हैं. Let's students, we have another case study, another statement for you, और फिर हम देखेंगे कि statement पे हम क्या questions generate करते हैं. Our country needs about 9 to 10% of the yearly increase in power capacity.
That means from the present 40,000 megawatt we have today, we require an additional 4,000 to 4,500 megawatt every year. The private industries or foreign companies may contribute by 1,000 to 2,000 megawatt. That means 50 to 75% of the capacity addition will have to be done by the public sector. But government cannot continuously give money for it. This means that the tariff has to be regulated to generate money, not based on the cost of 25 years ago. If this happens, optimum utilization of the power will take place. It will not be wasted. So, हम इस पे जाएंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है. Presently, is wasted as the tariff is too low. And the options are alpha, beta, Charlie, delta, and finally we have eta. अब इसको देखें, क्लियरली आपको समझ आ रही है लास्ट लाइन. वो कहते हैं कि the tariff has to be regulated, and if this happens, it will ensure optimum utilization of power. ठीक है. सो इट मीन्स कि अगर टैरिफ रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है. इट मीन्स कि सम ऑफ द पावर इज बीइंग वेस्टेड, और अगर उसने क्लियरली और भी कर दिया कि इट विल नॉट बी वेस्टेड, क्लियरली हमें बता दिया. सो द राइट ऑप्शन इज ट्रू. अब एक आर्ग्यूमेंट आप यहाँ ये बिल्ड कर सकते हो, शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में आए भी कि सर सारी वेस्टेज जो है वो टैरिफ की वजह से तो नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्वेश्चन आ सकता है ना आपके जहन में कि ये सारी की सारी शॉर्टेज जो है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लो टैरिफ, तो हाउ कैन वी से कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, इट मस्ट बी प्रोबेबली ट्रू. तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले आपने सोच लेना है कि वो कह रहे हैं कि सम पावर इज वेस्टेड. वो ये तो कह ही नहीं रहा क्वेश्चन में कि ऑल द पावर इज वेस्टेड या ऑल वेस्टेज इज ड्यू टू लो टैरिफ. वो कह रहे सम पावर इज वेस्टेड. तो सम पावर तो ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर सम पावर ना उस पर हो रही होती तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा होता. सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है दैट इज नॉट प्रोबेबली ट्रू, दैट इज true, because we are not talking about all the wastage in power sector, we are only talking about some wastage in the power sector, and some wastage is definitely due to the low tariff. So इस तरह से आपने इसको देख लेना. एक एक वर्ड मैटर करेगा, और एक वर्ड को अगर आप चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं सम की जगह फॉर एग्जांपल ऑल कर दूं, तो फिर ये क्या होगा, दिस स्टेटमेंट will probably be false, because सिर्फ एक चीज़ उसने कहा कि वेस्टेज थोड़ी सी इसकी वजह से भी है, तो सारी की सारी वेस्टेज तो इसकी वजह से नहीं है. सो दिस इज हाउ अ सिंगल वर्ड कैन चेंज योर ऑप्शन फ्रॉम ए टू डी और बी टू सी या वट एवर, जो भी चेंज आ सकती है. वो एक वर्ड भी क्या करेगा, पूरे के पूरे सिनारियो को शिफ्ट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. The public sector companies have done a commendable job in power sector. This is the second question, and same options we have A, B, C,
D and E, and you can relate these options to true, probably true, insufficient data, probably false or false. अब इसमें आप क्लियरली देख रहे हो और कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर हैज डन अ कमेंडेबल जॉब. इफ इट हैज डन सो, अगर उसने ऐसा किया होता तो फिर प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन की ज़रूरत ही नहीं थी, और फिर आपको जो है वो पावर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो भी फेस नहीं करना पड़ना था. नंबर 1. और नंबर 3 क्लियरली वो मेंशन कर रहा है कि इट कैन नॉट कंटिन्यूसली गिव मनी फॉर इट, मीन्स इट हैज़ मेड सम एफर्ट, ठीक है, बट उस एफर्ट को कमेंडेबल कहना दैट विल प्रोबेबली बी फॉल्स. कंप्लीटली फॉल्स नहीं कहेंगे, बिकॉज कंप्लीटली फॉल्स इसलिए नहीं कहेंगे because it is still generating 50 to 75% of the total power generation. So वो तो कर रहा है, तो 50 to 75% एक बहुत अच्छी है, but इसको ये कहना कि that is a perfect effort or that is a commendable effort, ये शायद थोड़ा गलत होगा. So this statement is probably false, because if you are inviting the private sector, if you are including the private sector, or if you are facing the power shortage, then probably it is hard to believe that the public sector has made a commendable effort or the public sector has done a commendable job. So our right option will be option delta. So कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस सिनारियो में वो एग्जाम्पल्स कैसे फिट इन होती हैं. लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. The private sector is not willing to install major plants for power generation. So ये स्टेटमेंट किस हद तक ट्रू है और किस हद तक फॉल्स, इसमें आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर and the foreign companies, they are already providing us 1000 to 2000. So they are actually contributing 25 to 50% of the total power. So अगर वो इतना ज़्यादा contribution कर रही हैं तो this statement is probably false, because अगर वो इतना ज़्यादा contribution कर रही हैं तो obviously such a massive contribution cannot be made by using small power generation plants. इसके लिए obviously वो क्या कर रही होंगी, major power generation plants ही install कर रही होंगी. So we cannot say कि ये statement जो है वो true है या ये statement जो है वो probably true है. This statement is probably false. ठीक है, completely false क्यों नहीं कह रहे, because कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि they will be more reluctant because of the tariffs. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. In future, there is a possibility that tariffs may be increased. कि फ्यूचर में मुमकिन है कि टैरिफ्स जो है वो क्या किए जाएं, इंक्रीज कर दिए जाएं. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा एंड ईटा, it feels that alpha is the right option, that this statement is absolutely true. अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि absolutely true कैसे है, it must be probably true. Again, look for the key word. We are only talking about a possibility. ये possibility तो 100% मौजूद है ना, because the public sector is not affording that power generation at this current rate. तो वो चूँकि afford ही नहीं कर रहे हैं, they cannot continuously give money as well,
दैट इज़ वाई पॉसिबिलिटी तो 100% मौजूद है कि वो क्या करेंगे, अपने इस टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, अपने इस टैरिफ को रिवाइज करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कन्फर्मिटी, हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी। तो यस, पॉसिबिलिटी तो इसमें 100% पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। लास्ट वन देखते हैं इसी का। If we attain %10 annual increase in power capacity, we shall have no problems in this sector। कि अगर हम एक दफ़ा 10% एनुअल इंक्रीज इन द पावर जनरेशन और इन द पावर कैपेसिटी हासिल कर लें तो फिर हमारे लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज हम यहाँ क्या कह रहे थे, हम यहाँ कह रहे थे क्या कंट्री नीड्स 9 to 10% of yearly increase, and if that 9 to 10% increase is ensured, obviously we do not have or we should not have any problem in future regarding power generation. So it is quite safe to say that this option is absolutely true. So hopefully ladies students, we are at the light board, and as I have just told you in the intro, today we are further discussing critical thinking. In the last lecture we discussed certain scenarios regarding critical thinking. इस लेक्चर में हम उन सिनेरियोज को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, द प्रीवियस वंस जो हमने देख चुके, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग। One type of questions we have already discussed in the last lecture, and we are continuing with it in this lecture, and later in this lecture we will discuss the second type of questions as well. So be very attentive और इसको देख लीजिएगा क्योंकि दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इस वाली टाइप से बहुत डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स सी कि सिनेरियो हमारे पास क्या है जी। सम पीपल थिंक दैट prospective employers should include a photograph with their application form. Such practice has been traditionally criticized for allowing more attractive individuals to go ahead or to get ahead in their careers over plain colleagues. Now, plain colleagues हम उनको कह रहे हैं यहाँ पर जो बड़ी कबूल सूरत है या मतलब average looks के साथ हैं, they are basically referred to as plain colleagues. However, study proves that it is not true. अब क्या चीज़ ट्रू नहीं है वो अभी आगे इसमें डिस्क्लोज करेंगे वो। This study is based on dumb blonde hypothesis that beautiful women are thought to be unwise. अब ये जो है स्टडी किस चीज़ को प्रूव कर रही है कि इट इज़ नॉट करेक्ट, कि दिस मेथड ऑफ selecting employees is not correct actually. वो ये नहीं कह रही कि ये आइडिया जो है वो इनकरेक्ट है. This study is actually proving that this method of selecting candidates merely on their looks is not correct. ठीक है, और वो उसकी आगे फिर वो रीज़न भी दे रहा है कि ये क्यों ये ऐसा कह रहे हैं. Because this study is based on a hypothesis that beautiful women are thought to be unwise. This is called dumb blonde hypothesis. Ruffle, the creator of this study, submits that the companies would be better advised adopting the selection model used by Belgian public sector, where CVs are anonymous and candidate names, gender, and photographs are not allowed to be included on CVs. Such a model allows the candidate to be selected on factors relevant to the applied role. मतलब उनको looks की बेस पे कोई advantage नहीं मिलना चाहिए. So now let's come to the questions and see what scenarios do we have. The very first question is, the dumb blonde
hypothesis states that beautiful women are unwise. And the options we have A, B, C, D and E. I have written these options for you. देख रहे A is for true, B is for probably true, C is for insufficient data, D is for probably false and E is for false. Just like the last lecture, we are following the same pattern actually. So we have already been told clearly that this dumb blonde hypothesis states that beautiful women are thought to be unwise. So it is evident, और यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि dumb blonde hypothesis क्या कह रहा है? It states that beautiful women are unwise. So this statement is absolutely true. ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास और कोई ऑप्शन इसकी है ही नहीं, बिकॉज जो स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट हमसे यहाँ पर पूछी गई है. Now move on to the second one. To reduce discrimination on the basis of appearance or gender. Here what we have been told that the Belgian public sector probably uses this method to reduce discrimination on the basis of appearance or gender. Here we cannot say absolutely true, but we can say that this segment or this statement I should say is probably true. Why it is probably true? Because we get an idea कि अगर वो ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेथड अडॉप्ट ही क्यों किया है बेल्जियन पब्लिक सेक्टर ने, एनोनिमस कैंडिडेट्स वाला और एनोनिमस कैंडिडेट्स नेम वाला. Why? Because to discriminate the advantage or disadvantage one can face due to appearance, gender or any other factor that is not relevant to the applied rule. So yes, we can say कि ये statement क्या है? It is not perfectly true. कोई ऐसा clear cut statement तो नहीं उनकी हमें दी हुई. But we can conclude from that discussion that they are probably doing it because they want to reduce that discrimination. Now let's move on to some more scenarios regarding this particular statement. Let's move on to the next question जी. The method adopted by Belgian public sector has helped reduce the discrimination regarding gender or
appearance. Again, we have the same 5 options. Now here we can see that we have not been told whether this method actually helped or not. ये तो हम कह सकते हैं because they were not interested or they banned posting a photograph or name or anything like that on the CVs. So we can say with confidence that they probably wanted to eliminate that discrimination based on appearance, gender or any other thing. But did they really achieve it? क्या उन्होंने वाकई उसको अचीव भी किया या नहीं किया? Was this method helpful or not? इसके बारे में कोई statistical data, कोई facts and figures जो है वो हमें इस statement में available नहीं है. So we can safely say that we require more data in order to verify that statement, in order to accept or reject that statement. Because यहाँ पर तो उन्होंने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना कि भाई इस मेथड से एक्चुअली मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म भी हुई या नहीं हुई. We haven't been told. So that is why we cannot reject or accept that statement. The only thing we can say is that we have insufficient data to actually claim that this statement is true or false. So इससे आपको समझ आ जाएगा. Secondly, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं. अब इसके बाद the method employed by Belgian public sector has intensified regarding gender or appearance. Now this statement is probably false. Why? It is not completely false because we do not have any statistical data or any facts or figures or any definition on which we can say that this statement is absolutely false. This statement is absolutely false. But we can feel they were not encouraging gender, they were not encouraging them appearance. So we can say safely कि इस चीज से वो discrimination intensify तो नहीं हुई होगी. And that is why here the right option for us will be option delta, that this statement is probably false. ठीक है. सो ये इस तरह से आप एक evaluation कर सकते हो कि whether a statement is true or false. Now let's go to the second type of questions regarding critical thinking. मैंने आपको बताया था at the start of this lesson when we were about to start critical thinking, तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं. एक तो ये scenario based है, we have practiced it enough and now we are moving towards the next scenario, the next type of questions कि वो हमसे किस तरह पूछे जाएंगे. So let's see वो क्या questions हैं. Then students, now we are heading towards the second type of questions regarding critical thinking, and I've already told you that in this particular type होता क्या है कि two statements are given. These 2 statements are facts. ये 2 statements होती हैं, ये clear cut facts होती हैं. और करना क्या होता है, on the basis
of these two factual statements you are asked to evaluate the third statement, whether it is true, false, or whether it's true, false or uncertain. So ये एक तरह से डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि आपके पास तीन स्टेटमेंट्स होती हैं इंस्टेड ऑफ तीन ऑप्शंस होती हैं इंस्टेड ऑफ 4 और 5 ऑप्शंस. इससे पहले हम जितने भी देख रहे थे उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या थी, ईदर वी हैड 4 ऑप्शंस और 5 ऑप्शंस. बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट इन अ वे दैट इट ओनली हैज 3 options for you, okay, whether a statement can be true or false, or we can say that this third statement is uncertain. So start करते हैं पहले क्वेश्चन से. और वो क्वेश्चन क्या है जी, in the last year Sarah has seen more dramas than Hera. That is your statement number 1. And your statement number 2 is Hera saw fewer dramas than Anna. And the third is Aram saw more dramas than Sarah. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये होगा, if the first 2 statements are facts, statement 3 is option alpha true, beta false, and Charlie uncertain. Now, how to solve these type of questions? Easiest thing you can do is to assign a particular numeric value. For example, here we said that Sarah has seen more dramas than Hera. So let's say we assume that Sarah has seen 20 dramas and it has seen more dramas than Hera. So Hera's drama can maximum be 19 because उससे कम देखने हैं 19. And then Aram saw, in the second statement we are saying Hera saw fewer dramas than Aram. क्या Hera ने क्या किया, Aram से कम dramas देखे. It means कि Aram, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके ड्रामास 20 से लेके अनलिमिटेड हो सकते हैं because we have not compared Hera's drama with Sarah. We are comparing the drama seen by Hera
विद द ड्रामास सीन बाय एरम। तो हेरा के कितने थे 19। अब हेरा ने एरम से कम देखे, इट मीन्स के एरम के मिनिमम भी क्या होंगे 20 होंगे, बिकॉज हेरा से तो उसको ऊपर जाना है ना, तो उसके मिनिमम क्या होंगे 20, और 20 से आगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वी डू नॉट नो। ठीक है, सो ये क्या होगी, इट कैन बी अनसर्टन। द थर्ड स्टेटमेंट, एरम सॉ मोर ड्रामर्स देन सारा, बी नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि इसने कितने देखे हो, इसने भी 20 देखे हो, ठीक है, तो सारा और इसके क्या हो बराबर हो। या ये भी हो सकता है कि सारा ने से 30 देखे हो, फॉर एग्जाम्पल एक और सिनेरियो भी बिल्ड कर देता हूँ, सारा ने 30 देखे हो और हेरा के कितने हो 19, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक होगी ना कि हेरा हैज़ सीन फ्यूअर ड्रामास देन सारा, तो ये स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक होगी। और अब अगर इसको ये कह देते, ये 29 ही रहता और ये क्या करती 25 ड्रामास देखती, तो ये वाली दूसरी स्टेटमेंट तो हमारी तब भी क्या होती ठीक हो जाती, बिकॉज हेरा हैज सीन फ्यूअर ड्रामास देन एरम, तो हेरा के 19 बन रहे थे और इसके कितने बन रहे थे 25 बन रहे थे, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाती। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या होती, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती। ठीक है, हेरा सॉ मोर ड्रामास देन सारा, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एरम जो है वो 25 के बजाय इट इज़ पॉसिबल कि उसने क्या देखे हूँ 35 ड्रामास देखे हूँ, क्योंकि फिर भी हेरा से तो उसके ड्रामा क्या होंगे ज़्यादा ही होंगे ना, जो उसने ड्रामा देखे हैं वो हेरा से क्या होंगे ज़्यादा ही होंगे, तो 35 भी तो ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो मैक्सिमम के तो कोई लिमिट इसमें दी नहीं हुई। सो इट कैन बी करेक्ट और इट कैन बी इनकरेक्ट, दैट इज़ व्हाई वी आर चूजिंग अनसर्टन। ठीक है, इस तरह से आपने इसको देख लेना कि किस तरह से आप अनसर्टन की ऑप्शन कैसे चूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, all roses in Ali's garden are red. All tulips in Ali garden are white. ठीक है, and the statement 3 is that is your statement 2 and that is obviously statement number 1. Statement 3 is all flowers in Ali's garden are either red or white, and the options are true, that is your option alpha, beta is false, and Charlie is uncertain. Now this option is also uncertain, Charlie. Why? Because the first two statements are only about tulips and roses. पहली दो स्टेटमेंट्स तो क्या है, सिर्फ ट्यूलिप और रोजेस के बारे में है ना। अब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अली के बाग में सिर्फ ट्यूलिप और रोजेस ही है, देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट फ्लावर्स, तो और भी तो हो सकते हैं ना। सो अगर तो ये लिखा होता ना कि स्टेटमेंट 1 होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता है कि अली हैज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन हिज गार्डन and all the tulips are red and all the roses are red and all the tulips are white. अब
यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट होती है ना कि ऑल द फ्लावर्स इन अलीज गार्डन आर ईदर रेड और वाइट, तो यहाँ पर फिर हम उसको करेक्ट कंसिडर करते हैं, बिकॉज उस वक्त हम ये कह रहे होते हैं कि देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन अलीज गार्डन, बट हियर वी हैवंट सेड दैट, वी हैव जस्ट एक्सप्लेन कि अली के बाग में जितने रोजेज हैं वो क्या हैं, रेड हैं, और ट्यूलिप्स क्या हैं, वाइट है, बट वी हैव नॉट कॉन्फाइंड दीज फ्लावर्स टू ओनली टू। दो तक तो हमने उसको महदूद नहीं किया, देयर कैन बी सो मेनी अदर फ्लावर्स, हो सकता है उसने और बेशुमार फूल लगाए हों, सो हाउ कैन वी से दैट ऑल द फ्लावर्स इन अलीज गार्डन आर ईदर रेड और वाइट, सो ये हम नहीं कह सकते। हाँ, तो अगर एक क्वेश्चन फिर ये भी आ सकता है कि सर देन व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉर फॉल्स, फिर तो फॉल्स पे चले जाना चाहिए। तो भाई फॉल्स पे इसलिए नहीं जा रहे कि ये भी तो मुमकिन है ना, दैट इज इक्वली पॉसिबल कि उसने क्या किए हों, दो ही फ्लावर्स लगाए हों, तो दोनों चीज़ें चूँकि पॉसिबल हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द ऑप्शन अनसर्टन, कि मतलब ये क्लियर नहीं है कि दो ही हैं या नहीं है, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, अ राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू विल बी अनसर्टन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। प्लीज स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के। द स्टेटमेंट वन इज all the rooms on floor 10 are carpeted. Secondly, all the carpets are green in color. And the third statement is all the rooms on floor 10 are carpeted with green color carpets. Now you'll have to identify whether the third statement is true or false. बड़ा क्लियर है कि फ्लोर 10 पर जो है वो क्या है, पहली चीज़ जो हमने देखनी है फ्लोर 10 पे, that all rooms are carpeted. This is a fact. Now all the carpets are green in color. तो जितने भी carpets हैं वो क्या हैं, वो हैं ही सिर्फ ग्रीन कलर में। It means कि जो रूम 10 पे जो carpets मौजूद हैं वो भी क्या होंगे, they will also be green, क्योंकि सारे के सारे carpets क्या हैं, they are all green in color. So जब हमारे पास ऑप्शन आएगी true, false and Charlie uncertain, will surely go for alpha, because जब हम कह रहे हैं कि सारे कार्पेट्स हैं ही ग्रीन कलर के, तो फिर जो 10th फ्लोर पे कार्पेट्स होंगे वो भी क्या होंगे, 10th फ्लोर पे जो रूम्स होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रीन कलर के कार्पेट से ही कार्पेट किए गए होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश अ फैक्ट यूजिंग योर सिंपल लॉजिकल रीजनिंग. और एक क्वेश्चन करते हैं इसी हवाले से. क्वेश्चन 2 देखते हैं जी हम. Enrollment in Ahmed's class is higher than
enrollment in barber's class, beta enrollment in barber's class is higher than that of Saud's class. In Charlie, enrollment in Saud's class is the lowest. अब तीन चीज़ें आ गई कि तीन लोगों की एनरोलमेंट की बात हो रही है, तीन लोगों की क्लासेस की. सपोज कर लेते हैं हम अहमद के क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. वी जस्ट सपोजिंग से इट इज़ 50. ठीक है. और वो कह रहे हैं कि उसकी क्लास में बाबर की क्लास से ज़्यादा लोग हैं. तो इट मीन्स कि बाबर की क्लास में अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होंगे तो दे मस्ट बी 49, नॉट बियॉन्ड 49, बिकॉज 49 से आगे जाएंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी. सेकेंड, वो कहते हैं कि एनरोलमेंट इन बाबर्स क्लास इज हायर देन दैट ऑफ सऊद्स क्लास. तो सऊद की क्लास में कितने होने चाहिए, दे कैन मैक्सिमम बी 48. ठीक है, 48 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना. थर्ड, वो कह रहा है कि एनरोलमेंट इन सऊद्स क्लास इज द लोएस्ट. तो ये क्या होगा, ट्रू, false or uncertain. We can surely tell that this statement is absolutely true. वजह उसकी क्या है, क्योंकि ये इससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगी. इस स्टेटमेंट को जब हम न्यूमेरिक फिगर्स में देखेंगे तो इट कैन ओनली गिव अस वन ऑप्शन एंड दैट इज ट्रू. सो इस तरह से आपने इन चीज़ों को लॉजिकली न्यूमेरिक वैल्यूज देके देख लेना है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अभी कंटिन्यू करेंगे, आपने परेशान नहीं होना. थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं जी. मैंगोज कॉस्ट more than apple. That is the first thing. Second, grapes cost more than apples. And the third statement is grapes are most expensive to buy. अब ये अपेरेंटली आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पहले जैसे सवालों की तरह, बट ये वैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम मैंगोज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 200 पर केजी, एज्यूम कर रहे हैं. और दूसरा हमने क्या कहा, दे कॉस्ट मोर देन एप्पल्स. तो ये क्या है, इट कैन बी लाइक 190 केजी, एज्यूम कर रहे हैं हम. ठीक है. नाउ ग्रेप्स कॉस्ट मोर देन एप्पल्स. अब ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, 190 प्लस होनी चाहिए. अब ये 195 भी हो सकती है और ये 205 भी हो सकती है, ये 300 भी हो सकती है, एंड इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. ठीक है. सो यू कैन क्लियरली टेल that here if we are given an option
that whether this statement is true, false, or uncertain, you can clearly tell that it is uncertain. Because हो सकता है कि वो most expensive ना हो, अगर उसकी प्राइस हम रख लें 199 तो फिर वो most expensive नहीं होंगे, because then the grapes will be cheaper than mangoes. और अगर हम उसकी प्राइस रख रहे हैं 205 या 300 तो then they will become more expensive than any other fruit. So यहाँ दोनों ही चूँकि ऑप्शंस पॉसिबल हैं, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? Our correct option will be option Charlie, that is uncertain. So इस तरह आपने डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज देके सपोजिशन के थ्रू इन चीज़ों को इवैल्यूएट करना है कि ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है. सो आए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग इसकी डिफरेंट सिनेरियोज की देख सकें. सो लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जांपल्स. नहीं मेरे बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं इसी हवाले से. Statement 1 is Imran weighs more than Hashim. Number 2, Hashim weighs less than Hera, and the third statement is Hera has the least amount of weight. ठीक है, अब ये तीन स्टेटमेंट्स उसने हमें दे दी. नंबर 1 क्या है कि जी इमरान वेज मोर देन हाशिम, के इमरान का वेट जो है वो हाशिम से क्या है ज़्यादा है. एंड देन हाशिम वेज लेस देन हरा, और हाशिम का वेट जो है वो हिरा से भी क्या है कम है. सो हिरा हैज़ द लीस्ट वेट, हिरा हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेट कंसिडरिंग ऑल दीज थ्री. तो आप देखिए ऑप्शन अल्फा है ट्रू, बीटा एज यूजुअल इज फॉल्स, एंड चार्ली इज अनसर्टेन. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली आप देखिएगा. से हम कहते हैं इमरान का वेट है 59 kg, assume कर रहे हैं हम, and he weighs more than Hashim. So Hashim का weight क्या होना चाहिए? We are assuming that it is 55 kg. वैसे तो 58 तक भी जा सकता है, but we are assuming that it is 55 kg. And Hira has more weight than Hashim. ये थर्ड स्टेटमेंट में ये दे रहे हैं ना, तो हिरा का वेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 56, या अगर इसका 59 होता तो उसका क्या होता 60. ठीक है, तो हिरा हैज द लीस्ट वेट. नो, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स. लीस्ट वेट तो उसका किसी भी सूरत में नहीं है, अनसर्टन नहीं हो सकता. दिस विल श्योरली बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि हाशिम का वेट क्या है हिरा से कम है. तो दिस स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू. किसी भी हाल में किसी भी तरह से आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू प्रूव नहीं होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अनसर्टन, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज all the trees in
Amna's garden are flowering trees. Second is some of the trees in Amna's garden are pines. And the third statement is all the pines are flowering trees. Option alpha is true, beta is false, and Charlie is uncertain. Now let's evaluate. वो कहते हैं all the trees in Amna's gardens are flowering trees. तो बिल्कुल सही है. Some of the trees in Amna's garden are pines. उसमें से कुछ दरख्त जो हैं वो क्या हैं? पाइन के हैं. Now all the pines are flowering trees. This is not true. Be very careful. याद रखें ये ट्रू नहीं है. अपेरेंटली आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो आमना के बाग में क्या है? फ्लावरिंग ट्रीज हैं. तो पाइन्स भी हैं वो भी क्या है? वो भी आमना के बाग में लगे हुए हैं. तो पाइन्स भी क्या होंगे? वो फ्लावरिंग ट्रीज होंगे. बट यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा. वो कह रहे हैं कि ऑल द पाइन्स आर फ्लावरिंग ट्रीज. तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना. अगर तो वो ये कहता ना इन केस all the pines in Amna's garden, in case वो ये कहता तो फिर हम क्या करते? फिर हम इसको कहते true, because all the trees are flowering trees. तो pines भी उन्हीं में हैं. तो obviously ये भी क्या होंगे? ये भी flowering trees होंगे. बट यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आमना के बाग में जितने दरख्त हैं वो फ्लावरिंग ट्रीज हैं. उनमें से कुछ जो हैं वो क्या हैं? पाइन्स के भी हैं. बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो सारे के सारे क्या होंगे? मतलब उस बाग के बाहर भी जितने पाइन्स के दरख्त हैं इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो भी सारे क्या हों? फ्लावरिंग ट्रीज हों. हो भी सकते हैं कि सीजन ऐसा चल रहा हो दे आर ऑल फ्लावरिंग. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी ना. ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे क्या हों? फ्लावरिंग ट्रीज हों. सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड will be option Charlie, that is uncertain. आगे बढ़ते हैं. Apartments in mall X cost more than the apartments in mall Y. Secondly, apartments in mall Y costs more than the apartments in mall Z. ये second statement होगी. And the third statement is apartments in mall X are the most expensive. अब ये बिल्कुल वेरीफाई करते हैं इसको कि whether it is true, false or Charlie
अनसर्टन। देखते हैं, से मॉल एक्स की जो प्राइस है अपार्टमेंट की, दैट इज 75 लाख। मॉल वाई की जो प्राइस है दैट इज 50 लाख। तभी उससे कम होंगे ना, अदरवाइज तो वो प्रॉब्लम ही अनरिजॉल्व रह जाएगी। मॉल एक्स के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस मॉल वाई के अपार्टमेंट से ज़्यादा है। सो इनकी हमने अज्यूम की 75 लाख और इनकी क्या की 50 लाख। सेकेंड में वो कहते हैं कि अपार्टमेंट्स इन मॉल वाई कॉस्ट मोर देन द अपार्टमेंट्स इन मॉल जी। तो अब मॉल जी के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, मॉल वाई के अपार्टमेंट से भी कम होनी चाहिए। तो दे मस्ट बी अराउंड 40 लाख, या मतलब इवन 49 तक भी हो तो उससे तो कम ही होगी। तो 45 लाख या 40 लाख। तो यहाँ पर आपको क्लियरली लग रहा है, यू कैन क्लियरली डिड्यूस दैट दिस स्टेटमेंट इज, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज अपने मॉल एक्स जो है उसके अपार्टमेंट्स में वो कंपैरेटिवली आपको मोस्ट एक्सपेंसिव लग रहे हैं। और ये वो स्टेटमेंट है जो हर हाल में ट्रू ही रहेगी, इसको किसी भी तरह से फॉल्स नहीं किया जा सकता। तो दिस इज हाउ यू कैन असाइन different values, you can create different assumptions to verify the truth of the statement. और critical thinking में रिमाइंड करवा दूँ आपको, प्रॉब्लम ही बुनियादी तौर पे ये, उसमें यही आपने डिटर्मिन करना है कि हाउ टू सेपरेट फॉल्सहुड फ्रॉम ट्रुथ, यही काम है हमारा। आए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि वो हमें कैसे हेल्प आउट करेंगी इन सेपरेटिंग ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। ले मेरे बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इस लास्ट चंक पे। हम स्टेटमेंट 1 इज शान runs faster than Imam. Beta, Imam runs faster than John. And Charlie, Sean is the quickest of all athletes. अब इस ट्रुथ को भी हम बिल्कुल उसी तरह वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शान की जो स्पीड है हमने एज्यूम की दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड शान रन्स फास्टर दैन इमाम। सो इमाम की स्पीड क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेसर दैन शान। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं इसको, दैट शुड बी 5 किलोमीटर पर आवर्स। एंड देन इमाम रन्स फास्टर दैन जॉन। तो जॉन की स्पीड इमाम से भी क्या होनी चाहिए, दैट हैज टू बी लेसर देन इमाम। तो इसमें आप देख रहे हो क्लियरली कि हाईएस्ट स्पीड जो है वो किसकी है, हु इज द फास्टेस्ट, दैट इज ऑब्वियसली शान। सो इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या होगी, दैट विल बी ऑप्शन अल्फा, that Sean is surely the quickest of all athletes. So इस तरह से आपने different numeric values assign करते हुए, different assumptions को इस्तेमाल करते हुए अपने answers करने हैं। एक और questions करते हैं। Temperature on Monday was lower than that on Sunday.
कि मंडे को जो टेम्परेचर था दैट वाज लोअर देन द टेम्परेचर वी हैड ऑन संडे. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज temperature on Tuesday was higher than the temperature we had on Monday. And the statement we need to verify is Sunday was the hottest of all 3 days. And the options are true, beta, false, and Charlie, uncertain. Now assume the numeric values. Get the temperature on Monday was lower than that on Sunday. So अगर संडे को हमारा टेम्परेचर था 30 डिग्री, तो मंडे को क्या आना चाहिए था? इट मस्ट बी 25 और बाय द मैक्सिमम 29 डिग्रीज, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम आगे नहीं जा सकते. एंड देन temperature on Tuesday was higher than the temperature we had on Monday. अब Tuesday को जो temperature था that was higher than Monday. अब दोनों possibilities हो सकती हैं. It can be like something between 26 to 29 degree. ये भी हो सकता है. And it can be like 31 degree to anything like say 50 degree. कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि उसने सिर्फ कंपेयर किया किसको? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज बीइंग कंपेयर्ड विद मंडे ओनली. इट इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद संडे. संडे के साथ तो इसका कोई कंपैरिजन आ ही नहीं रहा. तो संडे से कम भी हो सकता है और संडे से ज़्यादा भी हो सकता है. सो वी कैन टेल from these values that this statement that Sunday was the hottest day of all 3 days, ये statement क्या है? That is uncertain. Because अगर Tuesday को temperature is between 26 and 29, तो फिर तो क्या होगा? Sunday will become the hottest day. फिर ये statement true हो जाएगी. But अगर 31 से ऊपर चला गया हुआ तो Monday से तो फिर भी higher ही है, तो फिर ये statement क्या हो जाएगी? It will stand false. इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि it is neither true nor false, rather it is an uncertain statement. So इस तरह से आपने चीज़ों को थोड़ा देख लेना. एक और क्वेश्चन करते हैं इसका. Statement 1 is Sarah is taller than James. Then James is shorter than David. And third, David is shorter than Sarah. And we have the options
true, beta false, and Charlie uncertain. Now assume करते हैं हम कि सारा is taller than James, तो सारा की हाइट हम assume कर रहे हैं 6 feet, ठीक है, and then जेम्स की हाइट क्या होनी चाहिए? जेम्स इससे 6 से पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो सारा से क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी लेस देन सारा, एंड देन जेम्स इज शॉर्टर देन डेविड. जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, अब डेविड की हाइट क्या हो सकती है? इट कैन बी फ्रॉम 5.6 टू 5.9, ये भी हो सकती है, एंड इट कुड बी फ्रॉम 6 टू ऑनवर्ड, जितना मर्जी आप उसको एक्सटेंड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डेविड की हाइट जो है वो सारा से क्या है, कंपेयर इसमें नहीं की जा रही. थर्ड स्टेटमेंट में हमने देखना है कि डेविड इज शॉर्टर देन सारा. नाउ दिस स्टेटमेंट you can see from these facts that this statement is uncertain. It can be possible, अगर तो ये वाली स्टेटमेंट हो उसकी, डेविड की हाइट ये हो, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर 6 से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये obviously statement will hold false. That is why we are saying that this statement is neither true nor false, rather it is uncertain. So I do hope कि इस सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि दोनों टाइप्स के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं.